चलिए दोस्तों, आज ये हमारे पास गोदरेज की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आई है। कस्टमर का प्रॉब्लम है कि ये नॉइस बहुत कर रही है और घूम रही नहीं है। तो हमने सबसे पहले खोल के चेक किया हाथ से, ये ड्रम बहुत जाम जा रहा है। अब पूरा मशीन खोल कर देखेंगे ड्रम में क्या प्रॉब्लम है। अब देखने पर तो लग रहा है इसका बेरिंग जाम होगा। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले पीसीबी को हम निकाल कर बाजू को रख देंगे। वॉशिंग मशीन फ्रंट पैनल निकालेंगे। डोर स्विच स्क्रू निकालने के बाद डोर गैस्केट का स्प्रिंग निकाल दिया। नीचे ड्रेन पंप के पास स्क्रू निकालना पड़ेगा। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echo step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering caught in the rhythm, the stars and the
आप देख सकते हो बेरिंग की क्या हालत है, जिसकी वजह से कस्टमर को नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था। इनर बेरिंग आउटर बेरिंग दोनों खराब हो चुकी है। अगर आपको भी कभी ये प्रॉब्लम मशीन में दिखाई देगा तो बेरिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को नॉइज़ का और सामना करना पड़ता है और मशीन ठीक से चलती नहीं है। जिसके बाद आपको मशीन का ड्रम खोलकर इनर बेरिंग आउटर बेरिंग ऑयल से चेंज करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देख सकते हो हमने किस तरह से इस तरह से हमने इस मशीन का ड्रम खोलकर मशीन चेक किया। जो हमें देखने को मिला कि मशीन की कंडीशन बहुत बुरी थी। मशीन का इनर आउटर बेरिंग दोनों खराब था। अगर आपको भी कभी ये प्रॉब्लम आए तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हो। मशीन का इनर आउटर बेरिंग ऑयल से चेंज कर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।